Okay, hi, welcome to Competitive Triple B. So आज बहुत आदमी आ गया. गायत्री, प्रीति, वेलकम टू गायत्री. ओके, श्रीनिवास राव वेलकम. सो जो आ रहे हैं सब लोग उनको वेलकम. सो ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. वेलकम टू मानसा, गायत्री, प्रीति, श्रीनिवास राव, ऑल आर वेलकम. सो फर्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या आप लोगों का? सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे. सो हम लोग चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में चलो यहाँ पे 25 मल्टीप्लिकेशन 4. सो 25 मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस 15% ऑफ 200. ओके, सो 25 मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस 15% ऑफ 200. ओके, सो 25 4 जा, so 25 4 जा 100. Okay, so 25 4 जा 100 plus 15% of 200. Okay, so 15% of 200 means 00 cancel. Okay, 15 2 जा 30, 100 plus 30, what is your answer? 130. Okay, so 130 is your answer. Okay, so 130. Okay, so Gayatri correct answer, Srinivas correct answer. सो जो आ रहा है लाइक करके चैट बॉक्स में आते चलो दोस्तों, ठीक है. सो जितना लोग भी आ रहे हैं आप लोग सारे लाइक करो और चैट बॉक्स में आते चलो यहाँ पे. सो नरेश यादव वेलकम. सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 20% ऑफ 500. ओके, सो 20% ऑफ 500. सो 20% ऑफ 500 परसेंटेज 00 कैंसल. 20 मल्टीप्लिकेशन 5 इज 100 your answer. Okay, so next question, second question 20. Second question is what? Answer 100. Okay, so next third question. Okay, so third question, what is the value of 15 square, 25 square minus 20 square? Okay, so 15 square is 225 plus 25 square is 625. Okay, so minus 20 square is 400. Okay, so 225, so 800, 6 plus 2 800, 850 minus 400. Okay, so what is your answer? 450. Okay, so question number third. Okay, question number third is 450 your answer. Okay, question number third 450 your answer. Okay, so next question में आओ यहाँ पे. question number 4. question number 4 what? 48 divided by 6. Okay, so 48 divided by 6 multiplication 15 plus 9 means 24 minus 72. Okay, 6 4s are 24. 48 multiplication 4 minus 72. 4 8s are 32. 8 plus 3 112 minus 72. Okay, so which one is correct answer? 48 multiplication so give answer 122. so next to one time फिर से. So 48 divided by 6 means 8. Okay, so 8 plus 24. 48 divided 6 means 8 multiplication 15 plus 9 is 24 minus 72. 8 4s are 32. 8 2s are 16 plus 3 192 minus 72 means 19 minus 7 means so 12. Okay, so 122 is correct answer. Okay, so 122 is correct answer. So next question 5, fifth question. Okay, approximate value of under root 999. Okay,
approximation value of root triple nine. So 30 is 900 है ना. So 30 is 900, 31 is 96. Okay. 30 is 900, 31 is 961. Okay. So 32 is 1024. Okay. So 961 and 1024, 31.6. Okay, nearby. So under root triple nine is nearby 31.6. Okay. So 31.6 is your answer. Okay. So next question. सो जो आ रहा है दोस्तों लाइक करो, चार्ट बॉक्स में आते चलो यहाँ पे. सो जल्दी से आप लोगों का आंसर देते चलो आप लोग. ठीक है. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन. 1/5 of 750. ओके. सो 1/5 of 750 मल्टी प्लस 2/3 मल्टीप्लिकेशन 900. ओके. सो आंसर 5 से 25 15 टाइम्स जाएगा. 5 15 से 75, 150 plus 300. Okay. So total 600 means 750 answer. Okay. So answer is 750. Answer 750. Srinivas Rao, cold. Answer is 750. So next question. ఎవరైతే వస్తున్నారో చాట్ బాక్స్ की लाइक చేయండి. जो आ रहा है दोस्तों लाइक करो आप लोग. चाट बॉक्स में आते चलो, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे. आप लोग जल्दी से आ जाओ यहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे. 123 minus 87 multiplication 5 plus 10%. 1/10 multiplication 200. Okay. So 0 0 cancel. 13 minus 7 is 6. Okay. So 36 5s are plus 20. So 5 6 are 30, 180. So plus 20, 200 your answer. Okay. So 200 is your answer. Okay. So next question. Question number 8. Okay. Question number 8. So Srinivasa, Preeti, Naresh, Manasa, Gayatri, correct answer. So question number 8, 0.25. 0.25 multiplication 400. Okay. So plus 0.75 multiplication 800. Okay. So 0.25 means 1/4 100 हो जाएगा. ठीक है. 0.79 means 3/4. यहाँ पे कितना होगा? 3/4 means 4 से 200 कटेंगे यहाँ पे. सो 600 हो जाएगा. सो टोटल आंसर कितना हो गया यहाँ पे? 700. ओके. सो 0.25 मीन्स सो 25/100. ओके. सो 1/4 into 400 plus 3/4 into 800. So answer is 700 your answer. Okay. So option number A 700 is your answer. Next question. Okay. 700 is your answer. Okay. So next question, 9th question. Okay. 9th question 29.98. Okay. So 29.98 means 30. फिर से स्टार्ट हो गया इसको. सो 29.98. So 29.98 multiplication 32.02. So nearest answer 30 multiplication 33. So your answer is 990. Okay. So 30 multiplication 33 is
33 3s are 99. Okay, so 990 is your answer. Okay, so next question. Next 10th question. 7 by 8. So 7 by 8 multiplication 320 minus 1 by 4 multiplication 160 equals to x. Okay, so 8 4s are 32, 7 4s are 280, minus 4 4s are 60, minus 40 is your answer is 240. Okay, so answer is 240. Okay, so next question. Question number 11. Question number 11 is root 81 plus 64 square. Okay, so root 64 square, 9 plus 8, 17 square. 17 square is 289. Okay, so option number B is correct answer. Okay, so option number B is correct answer. Okay, 289, option number B is correct answer. Okay, so next question, 12th question. Okay, so 12th question, 18% of 500. Okay, so 18% of 500 plus 22% of 400. Okay, so percentage double zero cancel, 18 5s are 90, percentage double zero cancel, so 88. Okay, so 9 plus 8 17, 178 is correct answer. Okay, so 178 is correct answer. Next question, 178 is correct answer. Next question, 13th question. Okay, so what is the approximation value of 499 divided by 19.9? Okay, 499 divided by, so 500 by 20 करो यहाँ पे नियर बाई वैल्यू 225 है, so answer is 25. Okay, so answer is 25. कोई 0.1 नहीं होता, ठीक है. So answer is 25 answer. Next question, 14th question. Okay, so 14th question, 3 by 4 multiplication 28 plus 1 by 2 multiplication 36 equals to x. Okay, 4 7s are 3 7s are 21, 2 से 2 1s are 2 8s are 2 18s are 36, so plus answer is 39. Okay, so answer 39, option number A is 39 answer. Okay, so next question, 44. So 44 plus 55. Okay, so 44 plus 55 is 100. Okay, so 100 divided by 5 multiplication 10 minus 20. Okay, so 520 times 200 minus 20 means 180. Your answer option number C. Okay, so 180 your answer option number C. Okay, so जो आ रहे दोस्तों लाइक करके चार्ट बॉक्स में आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन. ओके, सो नाइस, ऑल मेंबर्स आर करेक्ट आंसर्स. जो करेक्ट, सब लोग करेक्ट दे रहे. आप लोग यही बने रहो. आप लोग जो आ रहे लाइक करके दोस्तों चार्ट बॉक्स में आते चलो. यहाँ पे देखो 1.1 मल्टीप्लिकेशन 90 प्लस 0.9 मल्टीप्लिकेशन 110. ओके, so 110, 90 plus 110, so nearest answer is 199. Okay, so 199, what is your correct answer? so जो आ रहे दोस्तों लाइक करो, चार्ट बॉक्स में आते चलो. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 14.99 स्क्वायर, so 15 square,
So 14.99 means 15 square. Okay, so 15 square is what? 225. Okay, 15 square answer is 225. Okay, so next question. 15 square is 225. Okay, so 15 into 15, last में 5, 5 5 is 25, 1 multiplication 2, so 225. Okay, so next question. So 18th question, 16th question doubt. Okay, clear करेंगे. 5 by 6 multiplication 72 minus 2 by 3 multiplication 54 equals to x. Okay, so 6 12s are 12 5s are 60, 330, 18 times 18 3s are 54. Okay, 60 minus 36 equals to answer 24. Okay, so which one is correct answer? 24. Okay, so answer is 24. Next question. Question number 19. Okay, so 100 minus 25 percentage. So actual percentage नहीं होगा यहाँ पे, 100 minus 25 होगा. ठीक है, so 100 minus 25 is 75. 75 multiplication 2 plus 50. Okay, so 150 plus 50, so 200 answer. Okay, so answer is 200. Okay, so सब लोग आंसर दे रहे हैं. यहाँ पे गायत्री नजर नहीं आ रहा है. गायत्री कट मार दे क्या? अरे ऐसे नहीं बोलने से कैसे होगा? यहाँ पे गायत्री नजर नहीं आ रहा है, कट मार दे लग रहा है. आ गया. सो यहाँ पे आप लोग बने रहो, नाम नहीं ले रहे. मतलब यहाँ पे हम लोग 32 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस 8 स्क्वायर मीन्स 64. ओके, सो 16 8 8 128. Okay, 128 minus 64 means 64 your answer. Okay, answer is 64. Correct answer 64. So first your answer 64. So next question. Okay, so 21 question number. Okay, 40% of 250. Okay, so 40% of 250. Okay, so 0 0 cancel, 0 0 cancel. Okay, 25 4s are 100. Okay, so 100 is option number A correct. Okay, so next question, 22 question number. Okay, 22 क्वेश्चन नंबर. उधर ऑप्शंस मत देखो, ऑप्शंस पूरा गलत है. ऑप्शंस के बारे में थिंक नहीं करना, हम लोग सॉल्व करना नियरेस्ट पे. उधर कोई आंसर ऐसे आप लोगों को मिलेगा नहीं, बट सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को देखना है सिर्फ. ठीक है, सो यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लिकेशन 300. ओके, सो 10 0 0 कैंसल, 9 5 45, 450 प्लस 0 0 कैंसल, 11 3 3 33 330. Okay, so 0 5 plus 3 8, 4 plus 3 is 7, 780 is your answer. Okay, so which one is correct? 780 is correct answer. Okay, so Srinivas correct answer 780. So 780. Preeti enna cheppunu sir. Give answer. Okay, so next to 23 plus 27 whole square minus 50 square equals to x. Okay, so 50 square is 2500 minus 2500. Okay, so it is 0.
So answer is 0. Okay. Answer is 0. Okay. So next question. Okay. So next question 0.2. So 0.2 multiplication 1500 minus 0.3 multiplication 1000. Okay. So which one is correct answer? 0.2 means 2 by 10. So 0.3 means 3 by 10. Okay. So 0 cancel 150 minus 100. Okay. So 0 cancel 150 minus 100 is your answer is 50. Okay. So question number Question number 24 is 50 your answer. Okay. So next question. Okay. Next question is 25th question 8 multiplication 12.5. Okay. So 12.5. Okay. So 8 multiplication 12.5 is 100 your answer. Okay. Your answer is 100. Okay. So next question. So 25% discount on 800 ఇవి చేసిన మనం. ఓకే. సో 50 క్వశ్చన్ కానీ చేసాం. ఓకే. సో మనం ఈ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చేసినాం కాబట్టి 50 క్వశ్చన్ పోదాం. ఈరోజు 50 క్వశ్చన్ నుంచి మనం కొత్త ఎత్తున్నాం. చూద్దాం ఏమైనా కొత్త వచ్చినాయి. కొత్త క్వశ్చన్స్ ఓకే 51 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఎవరైతే వస్తున్నారో లైక్ చేయండి. जो भी आ रहे हैं आप लोग लाइक करो चैट बॉक्स में आते चलो. 24 क्वेश्चन डाउट. सो डाउट ఏం చెప్పు. जो है डाउट पूछो यहाँ पे चैट बॉक्स में. क्या है वहाँ पे डाउट. सो यहाँ पे देखो 25% ऑफ 480. ओके. सो 25% ऑफ 480 मीन्स so 1 by 4 multiplication 480 4 1s are 4 2s are 0. Okay. So 120 is your answer. Okay. So Srinivas so डॉट क्या है. सो हम लोग चलेंगे. ठीक है 24th क्वेश्चन में अभी लास्ट में. ओके. सो 52 क्वेश्चन नंबर. ओके. सो 52 क्वेश्चन नंबर इज ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर इन 4 hours. व्हाट इज इट्स स्पीड. ओके. So 360 divided by total distance by time. Okay. So total distance is 360 divided by 4 means so 4 9s are 36 90 kilometer per hour. Okay. So what is your यहाँ पे क्या है आप लोगों का आंसर. क्या है आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3. ओके. So 90 kilometer per hour answer. Okay. So 90 kilometer per hour answer. Next question देखो यहाँ पे the average of 5 numbers is 20. Okay. So 5 multiplication 20. So 20 is 100. Okay. So if one number is 30 means यहाँ पे 30 निकालो. यहाँ पे 70 बचेगा. So remaining 4 numbers average 14 17 is 68. 2 बचेगा. 14 4 5 is 20. ओके. सो व्हाट इज योर आंसर. यहाँ पे क्या है आप लोगों का आंसर 17.5. ओके. सो क्या है आप लोगों का आंसर 17.5. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन. ओके. 54 क्वेश्चन. ए मैन बाय शर्ट 800 सेल्स 800 means CP, 1000 means SP, selling price. Okay. So what is the profit percentage? Profit percentage equals to profit divided by CP into 100. Okay. So 800 profit is 1000 minus 800 means 200 profit. CP means cost price 800 into say 100. Okay.
So 108 times 8 25 times. Your profit is 25%. Okay. So your profit is 25%. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, 1 सेकंड में ही आया, आप लोग तब तक ये क्वेश्चन करो. Okay, in a ratio 3:4 is the first part is 45. Okay, what is the second part? Okay, so first part is 45. 45 divided by 3. First part ratio is what? 3 ratio. Okay, so first part ratio is 3 ratio. Second part ratio is 4 ratio. 3 15. 1 ratio value is 1 ratio value is 15. Okay, 15 multiplication 4 is 60. Your answer. Okay. So option number C, 60 is your answer. So अभी तक आप लोगों का आंसर नहीं आया, मैं उधर जाके पानी पी के भी आ गया, आप लोग आंसर नहीं दिया अब तक. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 56th क्वेश्चन. ओके, सो सब लोग बनने रहे ना, आप लोग जो जो जा रहे हैं. यहाँ पे श्रीनिवास राव कहाँ चला गया फिर से? श्रीनिवास राव लाइन तोड़ कर दिया क्या? यहाँ पे जो जो आ रहे हैं आप लोग लाइक करो, चार्ट बॉक्स में आते चलो, आप लोग बने रहना. ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 5000. ओके, सो 6% एनम. सो 0000 कैंसल 300. ओके, सो टाइम ऑफ द पीरियड 600. ओके, सो 300 ऑफ x इक्वल्स टू 300 x इक्वल्स टू 600, मतलब मल्टीपल 2 years. ओके, x इक्वल्स टू 2 years, interest rate 2 years. Okay, so next question. So next question, what is the compound interest of 10,000 10% annum 2 years? Okay, so what is the logic? 10%, यहाँ पे क्या है logic? 2:1. Okay, so 10%. Okay, so 10% means 1 by 10,000 is your interest first year. So next 10% means 1000 10%, 1000 10%. Next, so percentage means 100 is your answer. Total 2100. Okay, so 2100 is your answer. Okay, 1000 multiplication 2. Okay, so 100 multiplication 1. Okay, so 1000 multiplication 2, 100 multiplication 2, so 2100 is your answer. Okay, so first option 2100 is your answer. Next question. So next question, so a pie chart shows sectors for expenses food 40%. Okay, so a pie chart shows sector for the expense food 40% and rent 30%, others 30%. Okay, so what is the angle of food? Okay, so what is the angle of food? 1% is 3.6 है ना. What is 40 multiplication 3.6? So 1% value is, यहाँ पे क्या है आप लोगों का टोटल 100% है. ठीक है, सो टोटल 100%. सो डिग्री 1 सर्किल इज 360 डिग्री.
So 360 by 100. Okay, so 0 0 cancel. 10 36 by 10 means 3.6 is one ratio value. Okay, so 1% value. 40 multiplication 3.6. Okay, so 40 multiplication 3.6 is 3600. 36 4s are 144. Point is 0 degree, 144 degree. Okay, so your answer is 144. Okay, so next question. 59th question. 5 men can do job 10 days. Okay, so 5 men can do job 10 days, and how many days will 10 men take? Okay, so 5 men can do job 10 days means 5 into 10. Okay, so total worker 50 worker. Okay, so matlab 50 men. Okay, so how many days 10 men? So 5 days. 10 by 50 by 10 means 5 days. Okay, so answer is option number A, 5 days. Okay, so next question. Okay, so next question is 60 question number. Okay, 60 question number. The cost price of an item is raised 600. So and selling price is 720. What is the profit percentage? Okay, so selling price minus cost price is profit. So 720 minus 600 is 120. Okay, so 120 divided by CP is 600 into 100. Okay, so 100 6 times 6 to 20 times. So answer is option number C, 20%. Okay, so option number C, 20%. Okay, so next question. Question number 61. Question number 61. 50 in a class, 50 students. Okay, so 30 students are boys. Okay, so 20 students are girls. Okay, so what is the percentage of girls? So 20 by number of students girls is 20. Okay, number of students girls is 20. Total students is 50. Multiplication 100. Okay, so 52 times 40 percentage is your girls. Okay, so 40 percentage is girls. Total strength multiplication 40 percentage means 5 tens are 20%. So 20 is your correct answer, hai na? So answer is 20 is your correct answer. Okay, so 40%, sorry, so 40 percentage is correct answer. Okay, so next question. 40 percentage is correct answer. Okay, so next question. Okay, so next question. A car travels 240 kilometer in 3 hours. Okay, what is the average speed? So total distance by time 80 kilometer per speed. Okay, so 80 kilometer per hour. Total distance by time. Okay, speed equals to total distance by time. So answer is option number C. Okay, so 80 kilometer per hour answer. Okay, so next question. Next question, 63 question number. Okay, so the average speed of 6 people is 25. 6 into 25. One person age is 35. What is the average age of the other 5? Okay, so 625 is 150. Okay, so 625 is 150. So 35 minus, okay, subtract. So 5, 14 minus 3 is 11. So 115, what is the average of 5 members? So 115 by divided by 5, 5 2s are 10, 1, 5 3s are 15. Answer is 23, option number B. Okay, so which one correct? 23, option number B. Okay, so next question, 64th question. Okay, 64th question. If
sum of rupees 8,000 earns 1,600. Okay, so 5% per annum. Okay, so 0000 cancel, 400 per year earn कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे 400 पर 1 year. ओके, सो आंसर 1,600 by 400. ओके, टोटल अर्निंग अमाउंट by yearly earning amount 400 4 times, so 4 years is your answer. Okay, so 4 years is your answer. Correct answer is 4 years. Okay, so next question, what is the compound interest 5,008% per annum? 4 years your answer. Okay, so next question. Okay, so compound interest 5,008%. करो आंसर चार्ट बॉक्स में बताओ आप लोग इसको, चार्ट बॉक्स में बताओ. यहाँ पे 2:1 है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 years का बताओ. यहाँ पे लॉजिक क्या बताया था उस दिन, 3:3. सो आप लोग करो इसको 1. ओके, सो इसको करो आप लोग चार्ट बॉक्स में, कोई एक तो आंसर करो इसमें 65 का. ओके, सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5:7 रेशियो, 5:7 रेशियो, टोटल 144. ओके, सो व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट, 7 रेशियो वैल्यू फाइंड आउट. ओके, सो यहाँ पे 12 है, टोटल रेशियो 144 डिवाइडेड बाई 12. सो 12 स्क्वायर इज 144, सो 12 इज योर 1 रेशियो वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे 12 है 1 रेशियो वैल्यू. सो 12 7 जा, so 12 7 is 84. Okay, so your answer is largest number, large part is 84. Okay, so next question. so फटाफट आंसर देते चलो दोस्तों, जो जो आ रहा है लाइक करके चार्ट बॉक्स में आते जाओ यहाँ पे. सो जो भी आ रहा है आप लोग लाइक करके चार्ट बॉक्स में आते चलो. यहाँ पे एक शार्प पीप करे, मार्क्स ऑन आइटम 20% अबोव कॉस्ट प्राइस. ओके, so 20% above cost price gives discount 10%. What is the profit percentage? Asking profit percentage. Okay, so 100 20% above means 20 ऐड करो. यहाँ पे 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 हो जाएगा. 120 में 10% डिस्काउंट करो तो 1/10. सो 12 इज डिस्काउंट. ओके, सो 120 माइनस 12 इज डिस्काउंट. So 108. Okay, so I'll compare with 100. So 8% is answer. Okay, so option number A, 8% your answer. Okay, next question. So answer is 8%. Okay, next question. 68th question. Okay, 8 workers complete in a task 12 days. 8 workers 12 days. So 12 8s are 96 workers total. Okay, so work how many days will 6 workers take? Okay, so 96 by 6 workers daily. So 6 1s are 6, 6 6 are 36. So 16 6 are 96 and 16 days is your answer. Okay, so answer is 16 days. Okay, so next question. Okay, so next question, the population of town increases by 10% annually. The current, if current population is 10,000, what is the, so 10,000 current population 2 years. Okay, 10%. Okay, so the population town increases 10%, so 11,000 first year. So next 10%, 1100, 11,000 plus 1100. Okay, so which one is correct answer? 12,100. Okay, so 12,100. Okay, so ఎప్పుడైనా మనకి 1000 లో ఇచ్చినా 10,000 లో ఇచ్చినా which one क्या होता आप लोगों का आंसर 2100 या 210 बढ़ेगा. ठीक है, सो 2 years का.
So next, train covers 300 kilometer in 5 hours. Okay, divided by 5, 60 kilometer per hour. So what is the distance does it cover in 7 hours? Okay, 7 multiplication 60. So 42 मतलब 420 किलोमीटर. ओके, सो व्हाट इज योर आंसर? यहाँ पे क्या है आप लोगों का आंसर? 420. ओके, सो आप लोगों का आंसर क्या है यहाँ पे? 420. कल से ऐसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसमें स्पीड मैथ्स की जगह मेंस का मैथ्स का 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वांट का डीए। सो कल से यहाँ पे स्पीड मैथ्स की जगह क्वांट का डीए करेंगे कुछ दिन तक, फिर से स्टार्ट करेंगे। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 18. ओके, सो 18 18 ओके, so 144. Okay, two numbers are 20 22 means 20 plus 22 is 42. Okay, so what is the average of remaining numbers? Okay, so 102 divided by 6 means 6 ones are 6 sevens are, so answer is 17. Okay, answer is 17. Okay, so next question, 72 question number, 12,000 7% per annum. Okay, so 12,000. Okay, so 12,000 7% per annum. Okay, so time of period पूछ रहे हैं यहाँ पे, so 12 7 से 84 840. Okay, so multiplication 840 x equals to 2520. Okay, so divided by 840, so 0 8 84 3s are 252. Okay, so 3 years is your answer. Okay, so 3 years is your answer. Okay, so next question. Okay, so जो आ रहा है दोस्तों लाइक करो, चार्ट बॉक्स में आते चलो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 6% पर 2 years. ओके, सो क्या करेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए? 2 years के लिए 2:1 लगाएंगे। यहाँ पे 6% करने से क्या होगा आप लोगों को? 480 आएगा। कितना आएगा? 6 8 48 है ना, सो 480 आएगा फर्स्ट ईयर। ओके, सो नेक्स्ट 480 6%। ओके, सो 480 का आप लोग 6% निकालो तो क्या होगा? 2 3 2 5। ओके, सो यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 5 2 10, 5 8 40, 4 रहेगा, 5 8 40, 28.8 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों को? 48 2 960 प्लस 28.8 मीन्स क्या हो जाएगा आप लोगों का? 988.8 हो जाएगा। सो यहाँ पे 988.8 हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे 74th। ओके, सो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोगों को? 988.8। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so next question is in a bar graph sales January are 200 units. Okay, so January 200 units, February is 250 units. Okay, what is the percentage increase? Okay, so 50 units is increase. Okay, so what is percentage increase? So total is 250, so 20% increase. Okay, 20% increase. Okay, so 50 is increase, total value is 250 into 100. Okay, so 50 5 से 5 से 20%, so 20% is increase. Okay, so next to 75th question, 75th question, 10,000 at 9% annum simple interest. Okay, so 10,000 9% annum simple interest 4 years. Okay, percentage 00 cancel, 900 multiplication 36. Okay, so 3,600, so answer is
So 3600, what amount to the after 4 years? So 10,000 plus 3600. Okay. So 13,600 your answer, first option. 13,600. Okay. So next question. Okay. 76th question. Okay. So यहाँ पे देखो आप लोग, if 12 pipe fill tank 8 hours. Okay. So 12 pipe fill tank 8 hours, 16 pipe take time. Okay. 16 pipe take time. So tell me fast. 12 pipe take 8 hours. Okay. So answer please fast. 12 pipes to fill a tank in 8 hours. How many hours will 16 pipes take? अभी तक आंसर नहीं दिया आप लोग. So answer is 12 pipe. Okay. So 12 pipe take 8 hours means 12 into 8, 96 total. Okay. So 96 hours, 96 divided by, so 16. Okay. So 16. So 6 hours your answer. Okay. So answer is 6 hours. गायत्री करेक्ट आंसर. जो आ रहा है दोस्तों लाइक करो, चार्ट बॉक्स में हो यहाँ पे. So next question. Okay. So 77 question, cost price is 2 items 500 700. Okay. Sold 600 800. What is the overall percentage profit? So profit is 100. Okay. 200 profit. So what is the percentage profit? So there is 20% profit. There is also 20% profit. Okay. 100 by CP 500 into 100 means, so 20% profit, 20% profit. So overall also 20% profit. Okay. So next question. So total CP is 1200. So 18400, 200. Okay. So answer correct है 20%. आप लोग जो आ रहा है लाइक करके चार्ट बॉक्स में आते चलो. The cost price of 2 items is 500 and 700, sold for 600 and 800. What is the overall profit percentage? So यहाँ पे क्या होगा, आप लोग दोनों लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेने से चलेगा. आप लोग यहाँ पे बताओ. The cost price of 2 items is 500 and 700, sold for 600 and 800. What is the overall profit percentage? So यहाँ पे आप लोगों का आंसर कितना है, यहाँ पे 20% है. सो हम लोग ऐसे करने से क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस मीन्स 1200 हो जाएगा हम लोगों को टोटल कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे टोटल 1400 हो रहा है, हम लोगों का प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 200. ओके.
सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेने से हम लोगों को 1200, 100 करने से हम लोगों को परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा, 12 से 1 बार कटेगा 80, मतलब यहाँ पे कितना बार जाएगा। सो ऐसे करने से हम लोगों को तेरा है 20% आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। सो 78 क्वेश्चन, ओके। सो 78 क्वेश्चन इज साइक्लिस्ट ट्रैवल्ड 180, ओके। सो साइक्लिस्ट traveled 180 divided by 4.5 hours, okay. So what is the speed? So total distance by time, okay. So total distance 180 kilometer divided by 445 multiplication 10, okay. So 9 5s are 9 20s are, okay. So 5 2s are. So to answer is 40 kilometer per hour, okay. So answer is 40 kilometer per hour, okay. सो के डाउट था, कभी कभी मेरे भी डाउट आ जाते, क्या करें इसमें। सो 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 79th क्वेश्चन, ओके। 79th क्वेश्चन, ओके। सो जो जा रहे, कौन जा रहा है, ये कोई भी नहीं जाना, ठीक है। सब लोग आंसर दे दो यहाँ पे। सो कोई तो चला गया यहाँ पे, प्रीति है, गायत्री है, मानसा चला गया यहाँ से मानसा भाग गया। So next question, the average marks of 10 students is 75, so means 750. One student is 85, means 85 minus, so 5, 74 minus 8 means, so 66. So 665 divided by 9, okay. So 9 7s are 63, 9 1s are 9 6, 9 7 9 6 are 54. So 71.6 means, so 9 7s are 63, 3 35, 9 7s are 63, 3 35 means, sorry, so 9 7s are 665 divided by 9, 9 7s are 63, 3 9 3s are 27, 9 4s are 36, okay. 9 3s are 27, 8 9 8s are 72. So answer is 74, okay. Answer is 74. So next question, so if you loan 15,000, 2,250 as interest at 5% per annum, okay. So what is the time, okay. So 15,000, so 15,000, so and to 5%, okay. 5% per annum means 15 5 is 75, 750 is 1 year. So 2250 divided by 750, okay. So 0 0 cancel, 75, so 3 times, so 3 years, okay. So answer is 3 years. So next question, answer is 3 years, okay. So यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 में, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years, okay. 6000, so 10% means first year 6600, next is 10% means 0, so 7260, okay. So next 10% means 726, okay. So 7986, okay. So what is your interest? So 600, 660 and 726, okay. 1986 your answer, okay. So 1986 is your answer. So next question, in a
in a ratio 2 is to 3 is to 5. Okay, so 2 is to 3 is to 5, 200. Okay, smallest pod is 2. Okay, so 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 1 ratio value is 20. Okay, so 20 to the 40. Okay, so your answer is 40. Option number A is correct answer. Okay, so your answer is 40. Option number A is correct answer. In a dealer buy goods 400. So a dealer buy goods 400, sales 480. So 480. So answer 80 is 400. 480 means 80 is profit. Okay, so 480 minus 80 is profit. Next question. So question number 84. 15 machines produce 300. Okay, so 15 machines produce 300 units in 10 hours. Okay, so how many units produce 15 hours? So 300 divided by 15, 1 hour 20 units produce. Okay, so 1 hour, sorry, 15 minutes, 20. So 10, 300 units means 300 by 10. Okay, sorry, 30 units. Okay, so 30 units per hour. So how many units in 15 hours? Okay, so 15 into 30. So कितना हो गया यहाँ पे 15 450. Okay, so answer is 450. Your answer option number B is correct answer. Okay, so option number B is correct answer. Next question. Population grows 8% yearly. So एक बता देना आप लोग आंसर. ठीक है, सो यहाँ पे अभी जल्दी क्लोज करेंगे, अपना टाइम हो गया. यहाँ पे बस ट्रेवल 360 किलोमीटर पर आवर इन 6 आवर्स. ओके, सो टोटल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो 8 आवर्स मीन्स 60 into 8 means 480 किलोमीटर पर आवर. 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस. ओके, सो आंसर इज 480. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so average of 12 numbers is 22. Okay, so average of average of 12 numbers is 22. Okay, so 12 2s are 24, 24 plus 2 264. So 25 plus 27 means 52. Okay, so 52 minus, so 212, so 212 divided by 10, so means 21.2. so answer is 21.2. Okay, so next question. So simple interest 8,000, 8%. Okay, so 18 8s are 144, 1440. So 4,320. Okay, so 0 0 cancel 3 times. Okay, so 3 years is your answer. Okay, 88 3 years is your answer. Okay, so next question. Compound interest 9,000, 7% per annum. So compound interest, so 2 is to 1. So 7% means 7 9s are 63, 630. So 630 7%. Okay, so 0 0 cancel, 7 3s are 21, 7 6 are 42, 44. Okay, so divided by 10 means 44.1. Okay, so 670, sorry, 630 into 2 means, so 1260 plus 44. Okay, so 1304 your answer. Okay, 1304. Okay, so compound interest है ना. Next question. Line graph profits 1 year 5,000 and year 2 600 increase which percent? 1000 increase. Okay, so how much percentage? 1000 increase means direct answer 20%. Okay, so 1000 increase means 20%. Okay,
So 5000, 20% value is 1 by 5. So 1000 increase. So answer is 20%. Okay. So next question. Investment of 12,000, 6% SI per 5 years. Okay. So investment of 12,000, 6%. Okay. So multiplication 5 years means percentage double zero cancel. 12 6 are 72, 720 multiplication 5, 500. So 36. Okay, 3600. 12,000 plus 3600 means 15,600. Option number A is correct answer. Okay. So 15,600 correct answer. Okay, next question. So 92 question, 20 workers in 15 days. Okay. So how many days? 30 workers. Okay. So total 300. So divided by 30. So 10 days. Okay. So answer is yours. So आपका आंसर क्या है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे 10 days है. Okay. Next question. So 93. Next question. CP is 800. Okay. So CP is 800, SP is 920, profit is 120, cost price is 800, multiplication 100, 8 times 8 ones are 8, 8 fives are. So 15% is your answer. 93 question. Okay. So 94th question. Speed boat still water 20 km per hour. So current 4 km per hour downstream. Okay. सो यहाँ पे जो आ रहे दोस्तों लाइक करो. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 20 किलोमीटर पर आवर, करंट 4 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड. सो क्या होगा यहाँ पे 20 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर होगा आपका. डाउन स्ट्रीम क्या होगा यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू स्टिल वाटर प्लस करेंट वाटर. ओके. सो करेंट स्पीड. ओके. सो यहाँ पे नेक्स्ट 95th क्वेश्चन. So 95th question, 95 question number 94, 95 question number. Okay. So 95 question number is 15 people average 28. Okay. So 15 8s are 120, 15 2s are 30, 420. Okay. So if 1 is 35 means 420 minus 35. So 385. Okay. So 385 divided by 14. So 14 2s are 28. Okay. So 14 105. 14 7s are 98. Okay. So 7 14 5s are 70, 27.5. Okay. So answer is 27.5. Okay. So next question, 96th question. Okay. So 25,000, 9%. Okay. So 9%. So double zero cancel 250 into 9. So 258, 25 8s are 200. So next to 25 is 225. Okay. So 2250. So divided by 4500. So 2 times. Okay. So answer is 2 years. So answer is 2 years. Okay. Next question. 97th question. 7,000 12%, 2 years. Okay. Compound interest. So compound interest means 2:1. Okay. Compound interest means 2:1. Okay. So 2:1.
2:1 ओके। यहाँ पे क्या है 2:1 मतलब 7012% ओके। सो परसेंटेज 00 कैंसल 12 7 840। So 840 means 840 multiplication 2 means 200, 2 4 8, 1680. So 1680 plus 840 12% okay. So 00 cancel. So 12 4s are 48, 12 8s are 96 plus 400 okay. 100 divided by 10 okay. So means 100.8 okay. So what is your answer? सो यहाँ पे आंसर क्या है आप लोगों का 1780.8 1780.8 ओके। सो 1780.8 compound interest 1780.8 okay। नेक्स्ट क्वेश्चन 98th क्वेश्चन। सो 98th क्वेश्चन इज 3:4:6 ओके। So 98th question is 3:4:6. So total ratio is 10 okay. So answer 1 ratio value equals to 26 okay. So 1 ratio value 26 okay. So इसको लास्ट में क्या हो गया काम करना बनता है। So यहाँ पे 3:4:6 ओके। सो मीन्स 260 मीन्स यहाँ पे 7 + 16 13 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई करने से हम लोगों को 1 रेशियो वैल्यू इज 20 ओके। सो मिडिल पार्ट मीन्स 4 रेशियो वैल्यू 4 × 20 मीन्स 80 हो जाएगा। आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए ओके। सो गायत्री करेक्ट आंसर। सो मानस MM ओके। So 8 Preeti 80 correct answer. Next question 99 question number okay. So market price 500 discount 15% okay. So market price 500 discount 15% selling price okay. So discount is 15% 0000 cancel 15 5 is 75 rupees discount to कर रहे हैं आप लोग। सो 500 माइनस 75 करने से क्या होगा 425 हो जाएगा आप लोगों का आंसर। यहाँ पे आंसर कितना हो गया आप लोगों का 425 ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 25% ऑफ मेंबर इज 75 ओके। सो यहाँ पे 25% ऑफ नंबर इज 75 बोल रहे हैं। 40% नंबर को पूछ रहे हैं आप लोग आंसर। So 25% of x equals to 75. So 25 3s are. So 100% value is 300. So 40% value fraction value. So answer is 60 × 2 means 120 is your answer. Okay. So यहाँ पे 120 is your answer. Okay. So next question. So यहाँ पे खत्म हो गया 100 question. Okay. Thanks to all. सो आप लोग सब लाइव में వాచ్ किया आप लोग। సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఓకే। సో లైవ్లో మీరు అందరూ వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ టు ఆల్। లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా। సో మీరందరూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే। ఎవరైతే లైవ్ తర్వాత చూస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా जो भी लाइव के बाद देख रहे हैं उन लोगों को सबको थैंक्स टू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। सो यहाँ पे जो मतलब बिल्कुल जो पढ़ाई के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है सौदा तो अपना कॉम्पिटिटिव ट्रिबल भी यहाँ पे है ठीक है। सो लास्ट तक ये फ्री में चलेगा आप लोगों को। बैंकिंग SSC रेलवे सब क्लास मिलेंगे आप लोगों को इसमें। सो आप लोग शेयर करते रहना। आप लोगों को अगर काम नहीं आएगा तो दूसरे को शेयर करो, किसी और का भला करो, आपका भला हो जाएगा दोस्तों ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आप लोग वॉच और पूरा करना है दोस्तों ठीक है। जो भी अपना लाइव में जुड़ रहे आप लोगों के पास अगर लैपटॉप है और कोई कुछ है तो आप लोग वॉच और भी पूरा करो। आपको आप स्पीकर ऑफ करके आप लोग हेल्प कर सकते हैं मेरा ठीक है। सो ओके थैंक्स टू ऑल ओके दोस्तों। सो फिर मिलेंगे सुबह यहाँ पे
नाइस, चलो डिनर, ओके आएंगे आपके पास नरेश, ओके। सो आज क्या बनाए डिनर में आप? सो यहाँ पे जो जो आ रहे हैं आप लोग लाइक, यहाँ पे हम लोग करेंगे जल्दी से, हम लोग पूरा करके डिजिटल क्लास में चलेंगे, डिजिटल में जाएंगे तो हम लोग को मजा आएगा, ठीक है। ओके गायत्री, थैंक यू, प्रीति, ओके बाय, सो नरेश बॉय, सो मानस, सो जो श्रीनिवास राव, सब लोगों को बाय। सुबह मिलेंगे एक आरआरबी का स्पीड बैच में, आरआरबी का एक सेक्शन लेके आएंगे, जस्ट स्पीड मैथ्स का 10-15 क्वेश्चन लेके हम लोग एक पूरा सेक्शन लेके आएंगे कल सुबह, ठीक है। कल संडे है ना, सो कल सुबह संडे आप लोग 8:30 को रेडी हो जाना, ठीक है। सो हम लोग कल 8:30 को करेंगे सुबह सुबह। सो आप लोग 8:30 तक आप लोग रेडी रहना, आप लोग 8:30 को हम लोग स्पीड मैथ्स का क्लास लगाएंगे, ओके। ओके, मतलब कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, ओके। थैंक्स टू ऑल, ओके बाय।